हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड ये जो घटना चक्र का साइंस हम लोग कवर कर रहे हैं, उसमें स्पेशली बायोलॉजी, उसका अगला पार्ट है ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। उसमें भी स्केलेटन एंड मसल सिस्टम को देखेंगे। पहले नोट्स आता है इसमें, फिर इसमें आता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो एक एक करके नोट्स पहले समझ लेते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक ब्रांच है विथ द शेप स्ट्रक्चर, जो कि कंसर्न करता है, मतलब रिलेटेड है। शेप स्ट्रक्चर रिलेशनशिप ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसी से संबंधित है। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? आपका शेप, जैसे आपका बोन जो है वो आपको शेप देता है, तो एनाटॉमी से हमें पता चलता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिलेशनशिप क्या है। हर पार्ट का, हर ऑर्गेनिज्म के पार्ट का रिलेशनशिप दिखाता है एनाटॉमी। ठीक है। सो स्केलेटन एंड मसल सिस्टम जो होता है, इट सर्व्स एज द फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी ऑफ द वर्टब्रेट्स लाइक इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ह्यूमन में आपने देखा होगा इस तरीके का कंकाल बना देते हैं ना, कंकाल जैसे ऐसे ऐसे पतली सी ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे रिब केज हो जाता है उसका, ऐसा हो जाता है, कंकाल बनाते हैं, फिर हाथ ऐसा होता है ना। तो ये जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है और मसल है, वो फ्रेमवर्क देता है कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ ऑल वर्टब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ठीक है। सो द स्केलेटन सिस्टम कंपोज्ड ऑफ बोन्स, बोन्स होते हैं, कार्टिलेजेस, जैसे अभी कान की हड्डी जो है ना, वो बिल्कुल मुड़ जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि जैसे नॉर्मल हड्डियाँ क्या बहुत सख्त होती हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, जैसे कान की हड्डी। ठीक है, वो कार्टिलेज का पार्ट होता है। लिगामेंट एंड अदर टिश्यूज दैट परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बोन टिश्यू और ओसियस टिश्यू इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल, बोन टिश्यू को ही ओसियस टिश्यू भी कहते हैं, इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। देखो बोन टिश्यू ना हमेशा पूछता है, कई तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक तो होता है कनेक्टिंग, जैसे कि ब्लड जो है, जैसे कि बोन टिश्यू है, ये सब टिश्यू कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं। इट फॉर्म्स द रिजिड पार्ट ऑफ द बोन्स, जो हम बोन टिश्यू की बात कर रहे हैं, दैट मेकअप स्केलेटन सिस्टम। Bone tissue is different from the bone themselves. Bones are organ made up of bone tissue as well as marrow. Marrow से और bone tissue से मिल के बनता है। marrow मतलब क्या समझते हैं आप? जो हड्डी है ना, इसके अंदर जो ये ब्लैक कलर का एक पार्ट अंदर फील होता है, वो मैरो उसको होता है। ठीक है, जैसे कभी आपने जो, अगर आप मटन वगैरह खाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उससे मैरो निकलता है। blood vessels, epithelium and nerves. It helps in movement and protect the internal organs of animals. Cartilages क्या होते हैं? They are a resilient semi-grid connective tissue found on the skeleton in areas of flexibility and smooth surface support movement. That is called cartilages. So what are the ligaments? Ligaments are the fibrous and dense connective tissues that connects the bones to other bones. जैसे कि लिगामेंट का एक अच्छा एग्जांपल, आपका जो घुटने में जो एक छोटा सा एक बॉल बियरिंग जैसा होता है ना, वो लिगामेंट है, जो कि कनेक्ट करता है आपको, कनेक्टिंग टिश्यू होता है लिगामेंट। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन और सिन्यू भी बोलते हैं, इस टफ बैंड ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन, उसको टेंडन बोलते हैं। ठीक है, और मसल टू मसल एंड इज डिजाइन टू विथस्टैंड टेंशंस। द मेजर फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर बॉडी सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट करता है, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टोरेज ऑफ mineral and fat and blood cell formation. Bones serve as the site for the fat storage and blood cell production. The unique semi-solid tissue that fills the interior of most bones is referred as bone marrow. There are two types of bone marrow, that is yellow bone marrow, which contain adipose tissue, and triglycerin stores in adipose for this tissue can be released to serve as a source of energy for other tissue of body. That next है red bone marrow, where the production of blood cell that named hematopoiesis, हिमैटो का मतलब होता है ब्लड, और पियोसिस का मतलब होता है टू मेक, टेक प्लेस. Red blood cell with the blood cells and platelets are all produced in the red bone marrow.
नाउ द स्केलेटन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में बांटा गया है, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। क्या है इसको देखेंगे। ए हार्ड आउटर लेयर दैट कवर्स, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी ऑफ एन इनवर्टिब्रेट एनिमल सच एज एन इंसेक्ट और क्रूस्टासियांस विच इज़ मेड ऑफ चिटिन। तो देखो कोई भी इनवर्टिब्रेट एनिमल हो, चाहे वो क्यों ना ह्यूमन ही हो, उसके लिए एक हार्ड आउटर कवरेज, जैसे आप देखा ना छाती में ऐसे 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 दिखता है आपको, है ना, ये एक हार्ड आउटर कवरेज है। इसी पे आदमी का पूरा स्ट्रक्चर, कंकाल जो है इसी पे चिपका रहता है आदमी का पूरा बॉडी, ठीक है। यही वो ढांचा देता है जो आदमी का शेप आता है, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्सोस्केलेटन skeleton of vertebrates include the scales in fishes and reptilians, feathers in birds, and hairs, nails, horns, hoops in the mammals. These are made of अल्फ़ा केराटीन प्रोटीन। तो ये भी पूछता है कई बार कि किस चीज़ का बना होता है, तो ये अल्फ़ा केराटीन प्रोटीन का बना होता है। इंडोस्केलेटन क्या है। ए हार्ड फ्रेम दैट supports the body of vertebrates animal on the inside, जैसे कि बोन्स एंड कार्टिलेज वगैरह, ये जो हैं अंदर वाले जो हड्डियां हैं और कार्टिलेजेस जो हैं जो इनसाइड सपोर्ट देते हैं, उनको इंडोस्केलेटन कहते हैं। वैसे भी एक्सो का मतलब होता है बाहरी और इंडो का मतलब होता है भीतरी, तो इससे भी आप समझ सकते हो कि इंडोस्केलेटन क्या होगा और एक्सो स्केलेटन क्या होगा। नेक्स्ट है बोन। बोन इज द सबस्टांस दैट फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. It is composed chiefly of calcium phosphate and calcium carbonate. It also serves as the storage area for calcium, playing a large role in calcium balance in the body. Chelagen in main structural protein which is found in organic matrix of bone and various connective tissues in the body. कार्टिलेजेस क्या होते हैं। कार्टिलेजेस इज रेजिलियंट एंड स्मूथ इलास्टिक बट सेमी ग्रिप, जैसे कान का मैंने टिश्यू बताया ना, उस टाइप का टिश्यू होता है। ए रबर लाइक पैडिंग दैट कवर्स द एंड प्रोटेक्ट्स द इंस ऑफ लॉन्ग बोन्स एट जॉइंट्स एंड इज ए स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑफ रिब केज, द ईयर, नोज, द ब्रोंकियल ट्यूब्स, द इनवर्ट Brill disc and many other body components. It is much stiffer and much less flexible than muscle. The matrix of cartilage is made up of aminoglycans, proteoglycans, and collagen fibers, and sometimes elastin. Cartilages does not contain blood vessels or nerves. Nutrition is supplied to the chondrocytes, the only cells found in healthy कार्टिलेज बाय डिफ्यूजन। इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन देखते हैं। द इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन इज एन इंटरनल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ हार्ड minimalized tissues that also enables movement by attachment of muscles. In adult human endoskeleton, 206 bones are found. It is comprised of axial and appendicular skeleton. Short details are given below such as axial skeleton क्या होता है। Axial skeleton of human is comprised of skull. Axial जो skeleton होता है सबसे पहले तो उसमें skull हो जाएगा। There are basically 22 bones in skulls. 8 cranial होता है और 14 facial होता है। ठीक है, क्रेनियल मतलब कि आपके सर पे, मुंडी पे जो उसमें जो हड्डियाँ होंगी क्रेनियल, और फेसियल मतलब जो फेस के स्ट्रक्चर में जो बॉडी होंगी उसे फेसियल बोन्स कहते हैं। स्कल का पार्ट होता है इन द ह्यूमन स्कल, इंक्लूडिंग हाइयोइड इन द नेक में एक हाइयोइड होता है, एंड द बोन्स ऑफ मिडिल ईयर्स। The head contains 29 bones, and in general classification these 29 bones are also considered as part of skull. These are as follows, जैसे कि देखो क्रेनियम 8 होते हैं, फेस में 14 होते हैं, ईयर में 6 होते हैं, 3 इन ईच ईयर। इसमें भी जैसे कि 2 हैमर टाइप के होते हैं, मेलियस बोलते हैं, और इनकस होते हैं, एनविल टाइप के 2 होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टेफिस जो होते हैं ये स्टीयर अप टाइप के होते हैं, 2 होते हैं ये भी, और हाइयोइड 1 होता है। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन। ये याद कर लो, रट कर लो, कई बार पूछता है ये
स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन। वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्रे एज फॉलो, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होता है इसमें। इट्स फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलास वर्टिब्रा। नेक्स्ट आता है थोरेसिक वर्टिब्रे, ये टोटल 12 होते हैं। लुम्बर वर्टिब्रे 5 होते हैं। सैक्रम वर्टिब्रे 1 होता है, 5 फ्यूज्ड सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं। और कुकिंग्स जो होते हैं वो 1 होता है, 4 फोकस्ड सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं। रिब्स की बात करें तो टोटल 12 पेयर्स होते हैं रिब्स में, यानी कि टोटल 24 होते हैं, वैसे 12 पेयर आपको याद रखना है। ईच इज़ सिमेट्रिकली पेयर्ड ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड। सिमेट्रिकली का मतलब ये है एक ऐसा होगा, बिल्कुल एक ऐसा होगा, मतलब एक जैसे बिल्कुल, ठीक है। एंड सिमेट्रिकली हो गया, हाँ। कंपोज टू पेयर्स ऑफ रिब्स। अच्छा, और थोरेसिक केज और रिब केज जिसको बोलते हैं इज कंपोज्ड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, स्टर्नम, कार्टिलेजेस, thoracic vertebrae. Of the 12 pairs of the ribs, the first 7 pairs are attached to vertebrae posterior and sternum anteriorly with costal cartilage. These ribs pairs are called true ribs. Number 8 to 12 ribs. Number 8 to 12 rib pair are attached to vertebrae posteriorly, but anteriorly they are not attached to the sternum directly. These rib pairs are called false ribs. समझ गए ना? 1 से लेकर 7 तक को रियल रिब्स, ट्रू रिब्स कहते हैं, और 8 से लेकर 12 को फॉल्स रिब कहते हैं। 8 to 10th ribs pairs connect to the sternum indirectly via the costal cartilage of the ribs above them. The 11th and 12th rib pairs do not connect to the sternum at all, so these two rib pairs are called floating ribs. Sternum क्या होता है? The sternum or the breastbone is the long flat bone located in the central part of the chest. It serves as the keystone of the rib cage and stabilizes the thoracic skeleton. Total number of bone in axial skeleton is 80 होता है टोटल। नेक्स्ट आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। द अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। ठीक है, कौन कौन सा चीज़ आ रहा है? शोल्डर गर्डल आ रहा है, अपर लिम्ब आ रहा है, पेल्विक गर्डल आ रहा है और लोअर लिम्ब आ रहा है इसमें। पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर गर्डल जो होता है उसमें टोटल 4 बोन्स होते हैं, जैसे कि स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड होता है जो हमारा, एक ब्लेड जैसा नहीं निकला होता है। आप अपनी मतलब कहते हैं ना, कई बार जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो हड्डी दिखने लगती है, वही हड्डी जो है वो शोल्डर ब्लेड होता है। इसके अलावा कैल्विकल कैलर बोन होते हैं टोटल 2। पेल्विक गर्डल जो होता है उसमें 2 बोन होते हैं। ओस इनोमिनेटम हिप बोन होता है 2। फिर इसके अलावा 4 लिम्ब होता है टोटल, इसमें 60 बोन्स होते हैं। अपर आर्म में 2 होगा, ठीक है, फोर आर्म में 4 होगा, एंड रिस्ट में 16 होते हैं टोटल, पाम में 10 होते हैं और फिंगर्स में टोटल 28 होते हैं। 14 ईच 4 लिम्ब में, फिंगर्स मिला के 28 हो जाता है। हिंड लिम्ब में जो है टोटल 60 बोन होते हैं, जैसे कि थाई, जिसे हम फेमूर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि थाई का जो बोन होता है वो वैसे सबसे लंबा बोन भी होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, फेमूर द थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन, कई बार पूछा गया है ये। इसके अलावा सैंक जो कि 4 होते हैं, नी कैप 2 होते हैं, एंकल जो होता है वो 14 होता है, और फुट में 10 होते हैं और फिंगर्स में 28 होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 होते हैं। इसके अलावा अर्थराइटिस, अब जान लेते हैं क्या होता है कि ये एक तरीके की बीमारी होती है
The word arthritis is used to describe pain, swelling, and stiffness in the joint or joints. Osteoarthritis is the most common type of arthritis when the cartilage, the sleek cushioning surface on the end of the bones wear away. Bones rub against the bone, causing pain, swelling, and stiffness. It can affect both the larger and smaller joints of the body, including the hands, wrist, feet, back, hip, and knee. Rheumatoid arthritis क्या होता है? Is a disorder in which the body's own immune system start to attack body tissue. It typically results in warm, swollen, and painful joints. In RA, most damage occurs to joint lining and cartilage, which eventually results in the erosion of two opposing bones. RA often affects joints in the knee, wrist, elbow, and fingers in the symmetrical appears on both sides of the body and can lead to severe deformity in few years if not treated. मेटाबॉलिक आर्थराइटिस क्या होता है, जिसे हम गाउट कहते हैं, इज दैट व्हेन यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड एज बॉडी ब्रेक्स डाउन प्यूराइंस, a substance found in the animal cells in many foods. The crystals of uric acid are deposited in the joints, resulting in the sudden spikes of extreme joint pain and a gout attack. एंथ्रोप्लास्टी क्या होता है? एंथ्रोप्लास्टी इज एन orthopedic surgical procedure where the articular surface of musculoskeletal joints is replaced, remodeled, or realigned by osteotomy or some other procedure. It is an elective procedure that is done to relieve pain and restore function to joint after damage by arthritis or some other type of trauma. वाटर परसेंटेज अब देखेंगे ह्यूमन बॉडी में. सो द परसेंटेज ऑफ वाटर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर ऑफ ह्यूमन. ठीक है, एज के और जेंडर के हिसाब से वेरी करता है. परसेंटेज ऑफ वाटर इन एडल्ट मैन 60 से 65% होता है. बॉर्न इन्फेंट में 78% होता है. इन्फेंट बाई 1 ईयर एज होता है 65%. इन एडल्ट वुमेन फैट्स मेकअप मोर ऑफ द बॉडी देन मेन, so they have about 55 to 60% of the water in their bodies. According to H. Mitchell, Journal of Biological Chemistry, the brain and heart composed of 73% of water. Lungs are about 83% of water. And skin contains 64% of the water. Muscle and kidney contain 79% water and bones contain 31% of the water. An adult male need about 3 liters water per day, while an adult female need 2.2 liter water per day. Water serves as a number of essential functions to keep up all going, जैसे कि a vital nutrient to the life of every cell, acts first as the building material. It regulates our internal body temperature by sweating and respiration. The carbohydrates and proteins that our body uses as blood are metabolized and transported by water in bloodstream. It assists in flushing waste mainly through urination. It acts as a shock absorber for brain, spinal cord, and fetus. It also forms saliva and lubricates joints. Chemical composition of human body. Almost 99% of mass of the human body is made up of 6 elements such as oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. Only about 0.85% is composed of another 5 elements such as potassium, sulfur, sodium, chlorine, and magnesium. So all 11 elements mentioned above are necessary for life. The percentage of different elements in our human body is shown in the table. ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है 65% होता है. कार्बन 18.5% होता है. हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1%, पोटेशियम जो है 0.4%, सल्फर जो है 0.3%, एंड सोडियम जो है 0.2%, क्लोरीन 0.2%, मैग्नीशियम 0.2%. ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स इंक्लूडिंग बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, molybdenum, and selenium, silicon, tin, vanadium, zinc are less than 0.1% of the human body.
कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड इज फाउंड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा ह्यूमन बोन में। ह्यूमन टूथ। द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting. Humans have 4 types of teeth. इंसाइजर्स। इंसाइजर क्या करता है? फूड को कट करने का काम करता है। कैनाइंस जो होता है टीयर करता है फूड को, और प्री मोलर और मोलर्स जो होते हैं क्रश और ग्राइंड करते हैं फूड को। द रूट्स ऑफ टीथ आर embedded in maxilla, upper jaw, or mandible, lower jaw, and are covered by gums. Human teeth are diphyodont, meaning that they develop 2 sets of teeth. The first set is called milk primary or deciduous set. Normally starts to appear to about 6 months of the age, although some babies are born with one or more visible teeth known as natal teeth. Normal tooth eruption at about 6 months is known as the teething or can be painful. तो बच्चे का तबीयत भी खराब हो जाता है कई बार. Humans usually have 20 primary teeth and 32 permanent adult teeth. Among permanent teeth, 16 are found in maxilla and 16 in mandible. Third molar are commonly called wisdom teeth and may never erupt into mouth or form at all. If any additional teeth form, such as fourth or fifth molars, which are rare, they are referred to as supernumeracy teeth or hyperdontia. Tooth enamel is hard, mineralized surface of the teeth. It is hardest substance of the body and it is whitish and shining substance. Essentially, nutrients of our body tooth include calcium, phosphorus, fluorine, and vitamin A, D, C. Calcium and phosphorus are needed to properly form the hydroxyapatite crystals, which is enamel primary mineral, and their level in blood are maintained by vitamin D. And demineralization begins with the bacteria in plaque on teeth. They feed on sugar and other carbohydrates in the mouth and produce acid. The acids dissolve crystals in tooth enamel. The loss of enamel is balanced by remineralization with the help of fluorine, calcium, phosphate, etc. Too much loss of minerals without enough replacement leads to tooth decay. Sartorius muscle is the longest muscle in the human body, which runs diagonally down the thigh. Then stapedius is the smallest muscle, which is less than 2 millimeter long, located in the middle ear. The strongest muscle in human body is masseter muscle, known as jaw muscle. Okay, jaw muscle strongest होता है and play a major role in the chewing of the solid food. तो क्या देखा हमने? लॉन्गेस्ट मसल क्या था? सार्टोरियस मसल. ठीक है. और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट है आपका मैसेटर. Record of lifting 975 pounds weight by jaw muscle for 2 seconds is registered in the Guinness World Record. अब हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक इसका. नेक्स्ट देखते हैं. वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ. किस चीज़ का बना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉम वाटर. सो द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी रेंजेस फ्रॉम 60 to 70%, and the average adult human body have 55 to 65% water. The percentage of water in infants is much higher, typically about 75 to 78%, dropping off to 65 to 70% by 1 year of the age. Water is best solvent in nature. Human body contains, correct answer हो जाएगा about 70% water. The percentage of water in an adult body is around, correct answer हो जाएगा इसका 65%. The most abundant element found in the human body is oxygen. Nearly 99% mass of human body consists of just 6 chemical elements, that is oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, and calcium and phosphorus. Oxygen is the most abundant element in the human body. It is mainly found in the form of water.
Water makes up 60 to 70% of human body and participates in countless metabolic reactions. The maximum amount of elements found in human body is calcium. एलिमेंट का पूछा है तो कैल्शियम, ठीक है. सो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ द 6 एलिमेंट, ठीक है. दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस. तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन. द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज 206. So the number of bones in the adult human body is 206. The body of child has about 300 bones at birth, which decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. Together, these bones form the axial skeleton and the appendicular skeleton. How many bones are there in human skeleton? Correct answer is D, 206. At the age of 20 years, the number of bones in human body is approximately, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जो होगा 206 आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्टेप्स हो जाएगा. सो द स्टेप्स इज द लाइटेस्ट स्टीयरअप शेप्ड bone and smallest bone in the human body, found in the middle of human ears. While femur is the largest bone in the human body, it is located in the upper leg, which connect the knee at one end and fits into the hip socket at other. The smallest bone in our body is found in, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ए, ईयर में, 11 का ए, ईयर. द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल, करेक्ट आंसर हो जाएगा 28. स्कल में टोटल 28 बोन होते हैं. सो द ह्यूमन स्कल एक्सक्लूडिंग हायोइड बोन ऑफ नेक कंसिस्ट ऑफ 28 बोन्स. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज न्यूरोक्रेनियम and facial skeleton, also called viscerocranium. Neurocranium has 8 bones and there are 14 in the viscerocranium, that is facial bones, and remaining 6 bones occur in the middle ear, which is helpful in listening. Which one of the following salt is found in maximum amount in human bones? Correct answer हो जाएगा C, calcium phosphate. Calcium phosphate is principal form of calcium found in bovine milk and blood. 70% of bone consists of hydroxyapatite, a calcium phosphate mineral known as bone mineral. Up to 50% by volume and 70% by weight of human bones is modified from hydroxyapatite. How many pairs of ribs are there in human body? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 12. द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्ड, दैट इज टोटल 24 rib bones. Each are symmetrically paired in right and left side. The ribs are flat, thin bones that together with the sternum make up the rib cage. The ribs provide protection for vital organs in the upper body, including heart and lungs. In human body, leg bone is called hollow. So each human long bone is composed of shaft, that is diaphysis, which with 2 flared end, that is epiphysis. The diaphysis resembles a hollow cylinder. It is made up of the hard compact bone that is resistant to bending. The inner cavity of diaphysis contains yellow bone marrow that stores fat. The epiphysis is a thin cell of compact bone filled with the lattice or sponge-like structure that is surrounded by red bone marrow, which makes red blood cell. What is arthroplasty in surgery? Correct answer हो जाएगा C, hip joint replacement. Hip arthroplasty or hip joint replacement surgery involves replacing components of hip joint with synthetic implant to repair the damaged part that is causing pain.
The bones are held together by elastic tissue are called, correct answer हो जाएगा ligaments. A ligament is a tissue that connects two bones to form a joint. It is fibrous and dense connective tissue. Flakes formed on teeth are made up of, correct answer हो जाएगा D, food particles plus saliva plus mouth acid plus bacteria. Dental plaque is a biofilm or mousse of bacteria that grows on surface within the mouth. It appears as a white pale yellow slime layer commonly found in between the teeth and along the cervical margins. Plaques formed on teeth are made up of the food particles, saliva, mouth acid, bacteria in the oral cavity. Saliva has a normal pH range of 6.2 to 7.6, with 6.7 being the average pH. No pain is felt while cutting the nail because, correct answer हो जाएगा, nails are made up of the material of dead cells in which there is no blood circulation is there. Nails are usually made up of the thick and multiple layer of the type of protein known as alpha keratin and are composed of dead tissues. They are devoid of any nerves and blood vessels, and therefore we do not feel any pain while the nail are being cut. Alpha keratin is a protein present in, correct answer हो जाएगा B, skin. So alpha keratin is a family of fibrous structural proteins. It is the key structural material making up the outer, that is epidermis layer of the human skin. It is the key structural component of hair, nail, hooves, and it provides the necessary strength and toughness for masticatory organs such as tongue and hard palate. Hair is composed of protein called, correct answer हो जाएगा C, keratin. So hair is composed of the protein keratin, which is also the primary component of finger and toenail. Which one of the following proteins is present in the human hair and nail? Correct answer हो जाएगा keratin. So keratin is an extremely strong protein that is major component in skin, hair, nails, hooves, horns and teeth. Which of the following are required for the formation of bones and teeth? Correct answer is calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. So teeth and bones both are hard, white and heavy. Teeth are composed of calcium, phosphorus and other minerals. Bones contain calcium, phosphorus, sodium and other minerals, but mostly consist of protein collagen. Which one of the following nutritional element is not essential for formation of the and strengthening of the bones and teeth? Correct answer हो जाएगा iodine. So calcium, phosphorus and fluorine are essential elements for the formation and strengthening of bones and teeth. Deficiency of these nutritional elements may cause teeth and bone disease, while iodine is used to control thyroid gland. The number of teeth that are developed twice in the lifetime of human being is, correct answer हो जाएगा C, 20. In human lifespan, 20 teeth developed twice. Like a human, most of the mammals are diphyodont. It means our 12 permanent molars are monophyodont and other diphyodont. There are four types of teeth, that is incisor, canine or premolar and molar. Which of the following is strongest part of our body? Correct answer हो जाएगा B, enamel. Tooth enamel is the thin outer covering of the tooth and the strongest part of our body. It makes our teeth white and it exists to protect crowns of healthy teeth. Tooth decay is due to the destruction of tooth enamel. It is made up of the hydroxyapatite crystal, which is mainly calcium phosphate. The strongest muscle in human body is found in, correct answer हो जाएगा jaw. So the strongest muscle based on the weight is the masseter, known as the jaw muscle. With all muscle of jaw working together, it can close the teeth with the force as as great as 55 pound, that is 25 kg, on the incisor or 200 pounds, that is 90.7 kilogram on the molar. Next देखेंगे
मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक तरफ है बोन, दूसरी तरफ है नेम्स। तो देख लेते हैं एक बार। ब्रेस्ट बोन है, कॉलर बोन है, नी कैप है, और इनका नाम बेसिकली देखना है, शोल्डर ब्लेड है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर इसका डी, यानी कि करेक्ट मैच देख लो इधर। ब्रेस्ट बोन स्टर्नम बोलते हैं इसको, कॉलर बोन क्लेवाइकल बोलते हैं, नी कैप को पेटेला बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला बोलते हैं। चलिए अब अगला देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम।